Hello students, let us quickly analyze the ICSE 2023 examination specimen question paper for the subject History and Civics. Maximum marks 80, time allowed 2 hours. Answer to this paper must be written on the answer sheet provided separately. You will not be allowed to write during the first 15 minutes. Utilize 15 minutes. During this period, read the question thoroughly. बहुत अच्छे से क्वेश्चन पेपर को पढ़ो, ऑप्शंस को पढ़ो और आंसर्स को याद कर लो. फिर let's see the most important part. Attempt all questions from part 1. Part 1 compulsory है. 16 questions है question 1 से और question 2 वहाँ पे 14 marks है. 7 questions each carry 2 marks. Attempt all questions from this part. You will have multiple choice questions, 4 options, analyze, eliminate and choose. Now let us quickly go through the paper. 1, 2, 3 basic questions. Read the text thoroughly from now on and you will be able to fetch full marks. MCQ questions tricky भी होते हैं और MCQ questions बहुत scoring भी होते हैं. इसीलिए pay attention to your MCQ preparation. और ऐसे questions बहुत interesting हैं. देखो question 7. Which of these was not an aim of the Indian National Congress? Question को पढ़ो, बार बार पढ़ो. अगर आंसर तुम्हें पता है फिर भी बाकी 3 options पढ़ो. Don't skip anything. फिर question 9. Which of these is not a repressive policy of Lord Lytton? So, you will have to apply the knowledge. Here 11, then 12, 13. Not वाले questions बहुत सारे हैं. 15 and 16. फिर हम questions 2 देखते हैं अभी. देखो क्वेश्चन 2 भी बहुत इंटरेस्टिंग है. इस साल क्वेश्चन 2 एक नया पैटर्न है. ये एक नया पैटर्न है. MCQ प्लस शॉर्ट क्वेश्चंस और यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चंस भी होंगे और इनडायरेक्ट एप्लीकेशन वाले क्वेश्चंस भी होंगे. Mr. Kaushal is 26 years of age. Which house of parliament can he be a member of? Why? 2 पार्ट्स है, 2 सब पार्ट्स है. और क्या हम लिखेंगे यहाँ पे? क्वालिफिकेशंस. 26 years of age. ये क्वालिफिकेशन देख के तुम्हें याद करना पड़ेगा लोकसभा या राज्यसभा. तो कॉन्सेप्ट्स, क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट्स इज इंपॉर्टेंट. सारे कॉन्सेप्ट्स, सारे डाउट्स क्लियर करते जाओ. Miss Anita wants to approach the Lok Adalat regarding a case. Mention any 2 advantages she will have by taking her case to the Lok Adalat. So 7 questions, 14 marks. After that, part 2, section A. Attempt any 2 questions from this section. यहाँ पे choice है. 2 questions तो compulsory हमें attempt करना ही पड़ेगा. और question 3 10 marks है. 3 plus 3 plus 4. फिर question 4. देखो यहाँ पे भी 3 plus 3 plus 4 10 marks है. And then 5 again 10 marks. So out of the 3 you will have to write 2 questions. Section B, what do we have here? ये है section B और इस section में 5 questions होंगे. इस section में भी choices है और out of the 5 questions you will have to attempt any 3 questions from this section. Again 3 plus 3 plus 4, 10 marks. 1 and then question 7, the second option, and then 8 and then 9. 9 में you will get a picture study. After this you have question 10. My dear students, this is your latest updated history and civics question pattern.
ICSE 2023.